गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 जो है वो नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो इंडिया का फॉर्मली एस्टैब्लिश हो गया है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? पीएम मोदी ने COP28 के टाइम पर 2023 में इसको लॉन्च किया था। गवर्नमेंट के लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट का ही अंडर एक प्रोग्राम है ये। एक मार्केट्स बेस्ड अप्रोच देता है ये इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए। तो 8 ऐसी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया है जिनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इंसेंटिव्स अर्न कर सकें ग्रीन क्रेडिट्स की फॉर्म में। जो इनिशियल फेज़ रहेगा उसमें तो वाटर मैनेजमेंट और फॉरेस्टेशन दो चीज़ों पर फोकस रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं, बाकी के 6 जो हमारी एक्टिविटीज़ रहेंगी उनको भी जो है वो कवर किया जाएगा, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन एट्सेट्रा। अब ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 जो हैं, एक्चुअल में तो ये 2023 में ही अक्टूबर में नोटिफाई किए गए थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और ये एक मैकेनिज़्म देते हैं वॉलंटरी इन्वायरमेंटल पॉजिटिव एक्शंस को इंसेंटिवाइज करने का। इनिशियल फेज़ जो है वॉलंटरी ट्री प्लांटेशन पर फोकस था, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो कैसे किया जाएगा कि जो अप्रूव्ड एंटिटीज़ हैं वो फाइनेंस दे सकती हैं एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट और फॉरेस्ट या वेस्ट लैंड में। लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्टेशन है वो खुद नहीं करेंगी, या एक्चुअल एफॉरेस्टेशन जो है वो खुद नहीं करेंगी, वो करेंगे स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। जब वो प्लांट्स उगा दिए जाएंगे उसके 2 साल बाद एक इवेल्युएशन होगी ICFRE की, और ईच प्लांटेड ट्री जो है वो एक ग्रीन क्रेडिट जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसने पे किया है उसके लिए उनको अर्न करवा देगा, ठीक है। तो जो ग्रीन क्रेडिट्स हैं ये कंपनीज यूज़ कर सकेंगी डाइवर्टेड फॉरेस्ट लैंड के लिए, जो उन्होंने डाइवर्ट किया है और नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, ठीक है। 10 स्टेट्स जो हैं उन्होंने अभी तक डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के जो है पार्सल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और छत्तीसगढ़ और MP दो स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें 40% ये फॉरेस्ट लैंड अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है पूरी कंट्री का। अब कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या होता है? अब कोई भी इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशन अगर जो है फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करती है तो उनको ऑफ कोर्स एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है वो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को देना पड़ता है, और उस पे जो एफॉरेस्टेशन का खर्चा भी उठाना पड़ता है। और ये कंडीशन होती है कि वो जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है वो जिस एरिया से उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की है उसके बहुत ही पास होना चाहिए, जितना भी पास हो सकता है, ठीक है। अगर वो पास में लैंड अनअवेलेबल है तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड जो है वो उनको अवेलेबल करवाना होता है एफॉरेस्टेशन के लिए। कंपनीज़ को उसकी कंपनसेशन भी देनी पड़ती है नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जो है वो डाइवर्ट कर लिया फॉरेस्ट लैंड, तो उसके हिसाब से जो जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया है उसके हिसाब से नेट प्रेजेंट वैल्यू उन्हें पे करनी पड़ती है। तो इश्यूज़ क्या हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के और इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के भी सेम ही इश्यूज़ होंगे। पहला तो ये है कि आपको पता ही है कि ऑलरेडी माइनिंग के लिए जो है बहुत सारा जो है फॉरेस्ट लैंड जो है वो डाइवर्ट किया जाता है, और उसके साथ में नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कंपनसेटरी ए फॉरेस्ट इसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि कंपनसेटरी ए फॉरेस्टेशन में फ़ंड जो है उसमें पैसा तो बहुत पड़ा है कंपनीज़ का, लेकिन स्टेट्स जो हैं वो लैंड ही नहीं ढूंढ पा रही हैं ए फॉरेस्टेशन के लिए। तो ये जो है ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम में भी यही प्रॉब्लम रहेगी कि एफॉरेस्टेशन के लिए पैसा तो दे देंगे इंडस्ट्रीज़ या क्रेडिट्स तो अवेलेबल होंगे, लेकिन प्राइवेट जो है ये लैंड जो है वो अनअवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो यही जो है प्रॉब्लम्स इसके साथ भी रहेंगी, इस स्कीम के साथ भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू सोलर पावर रूल्स टू बूस्ट प्रोडक्शन। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सोलर पैनल्स को इंडिया में इनकरेज करने के लिए प्रोडक्शन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा, जिसमें जो है मेकर्स ऑफ सोलर मॉड्यूल्स जो इंडिया में होंगे वो वॉलंटरली सबमिट कर सकते हैं कि उनके प्लांट पर या उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पर इंस्पेक्शन की जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की। अब उससे उन्हें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि जब उनको सर्टिफिकेशन मिलेगी कि हाँ ये जो कंपनी है लेजिटिमेट मैन्युफैक्चरर है सोलर पैनल्स की, कोई सिर्फ इम्पोर्टर या असेंबलर नहीं है, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट इशूड जो है टेंडर्स द्वारा के लिए। और उसमें जो है
जो जितने भी गवर्नमेंट के सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स हैं उसमें वो अप्लाई कर सकेंगे। जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम एक और स्कीम है। तो इन सब के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे टेंडरिंग के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है 24,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम भी जो है वो इनिशिएट की है, जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल्स और उनके कंपोनेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स इंडिया की सोलर इंडस्ट्री ऑलरेडी आपको पता है हैवीली रिलायंट है चाइना से इंपोर्ट करने के लिए। तो चाइना से जो है इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए ये रूल्स और नोटिफाई किए गए हैं। उनको किसी ना किसी तरह से जो है हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि हमें इंपोर्ट्स ना करने पड़े चाइना से। इंडिया का प्लान है 500 गीगावाट जो है सोलर, नॉट जस्ट सोलर बल्कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जो है एनर्जी जनरेट करना। और उसमें उसके लिए लगभग हमें 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर चाहिए होगा, या फिर 40 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी हर साल 2030 तक ऐड करनी होगी। इन द लास्ट 5 ईयर्स जिसमें से है जो है सिर्फ 13 गीगावाट ही ऐड हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ कोविड की वजह से जो है ये स्लो हो गई थी जो है ये ग्रोथ। तो इंडिया की करंट सोलर कैपेसिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग हाफ है, और बाकी का सब हमको इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से। इंडिया स्टिल अभी भी जो है वो सेल्फ रिलायंट नहीं है सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में। चाइना जो है 80% ऑफ सोलर कंपोनेंट्स ग्लोबली सप्लाई करता था, लेकिन यूएस के द्वारा कुछ सैंक्शंस लगाए जाने पर और यूरोप के द्वारा कुछ सैंक्शंस लगाए जाने पर इसका बेनिफिट इंडिया को मिला, जिसने अभी रिसेंटली पिछले साल $1 बिलियन के सोलर मॉड्यूल जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने एक रेजोल्यूशन जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उसमें अब्सटेन किया है, जो कि कह रहा था कि इसराइल को इमीडिएट सीज़ फायर करना चाहिए गाज़ा में, और बाकी स्टेट्स को कहा गया कि वो इसराइल के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाओ। तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूएन सिस्टम, जिनीवा बेस्ड है। 2006 में इसको यूएन जनरल असेंबली ने क्रिएट किया था। प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल है ये यूएन का। 3 बार मिलता है साल में ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन को वर्ल्ड वाइड जो है एग्जामिन करने के लिए। 47 स्टेट्स जो है वो इसके मेंबर्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं कि जितने भी जोग्राफिकल एरियाज़ हैं उन सबको वो इवनली रिप्रेजेंट कर सकें। जो मेंबर्स होते हैं वो 3 साल का टर्म इस पे जो है वो सर्व करते हैं, और एलिजिबल नहीं होते वो इमीडिएट री इलेक्शन के लिए आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब फंक्शंस क्या हैं इसके? ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को वर्ल्ड वाइड मॉनिटर करना, और यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू भी होता है। इसमें एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हर यूएन मेंबर की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को रिव्यू किया जाता है बाकी अदर मेंबर स्टेट्स द्वारा। यूएनएचआरसी जो है वो स्पेशल रिपोर्टर्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, वर्किंग ग्रुप्स ये सब भी अपॉइंट करता है फैक्ट फाइंडिंग मिशंस, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए। अब इंडिया ने जो है बाकी के जो रेजोल्यूशंस हैं उसमें तो फेवर में वोट किया था जो इसराइल को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन इस बार वोट नहीं किया, इस बार एब्सटेन किया। क्यों? क्योंकि इस बार का जो रेजोल्यूशन है उसमें हमास की कोई कंडेमनेशन नहीं हो रही थी, बल्कि इसराइल को ही अकेले कंडेम किया जा रहा था। जबकि इंडिया का कहना था कि दोनों पार्टीज़ को कंडेम किया जाना चाहिए और दोनों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स की जानी चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चांगपा ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और ले की एपेक्स बॉडी ने पश्मीना बॉर्डर मार्च को जो है वो कॉल ऑफ कर दिया है, जो कि चांगपा नोमैडिक ट्राइब्स की प्लाइट को हाईलाइट कर रही थी। तो चांगपा ट्राइब जो है वो सेमी नोमैडिक पीपल की ट्राइब है। चैंगटैंग प्लेट्यू ऑफ साउथ ईस्टर्न लद्दाख में ये पाई जाती है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल अफिनिटीज़ विद तिब्बतन्स ये शेयर करती है। जितनी भी चांगपा फैमिलीज़ हैं वो तिब्बतन बुद्धिज़्म को प्रोफेस करती हैं एज देयर रिलीजन, और ये हाई ऑल्टीट्यूड पेस्टोरलिस्ट्स हैं, ठीक है। जो इसमें नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं उनको हम फाल्पा कहते हैं। जो सेटल्ड ट्राइब्स हैं उनको हम फांगपा कहते हैं। बहुत सारी चांगपा ट्राइब्स जो हैं वो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, कंज्यूमिंग एंड सेलिंग देयर प्रोड्यूस, उनका ये ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। और ये चांगरा गोट्स जो हैं उनको रेयर करते हैं, जो कि पश्मीना फाइबर के लिए बहुत फेमस है, जो कि फाइनेस्ट फाइबर है जितनी भी गोट हेयर है उनमें से। 1989 में इनको चांगपा को
शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी दे दिया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन निकालने का फैसला लिया है जो कि सीमलेस इन्वेस्टमेंट देगा आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम में। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 में नवंबर में इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को एक्सेस देने के लिए गिल्ट अकाउंट्स का विद इन आरबीआई, और वो उससे जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकेंगे उस अकाउंट के थ्रू। जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइमरी ऑक्शंस में सिक्योरिटीज़ बाय कर सकेंगे या फिर सेल भी कर सकेंगे एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए। अब इससे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को डायरेक्ट एक्सेस ले सकेंगे एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? रुपी का सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए इंडिया में, पैन होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब जो पेमेंट्स हैं वो इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू की जा सकती है, कोई फ़ी उसके लिए चार्ज नहीं की जाएगी, जो भी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अरो कोट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने एक मॉडल प्रिपेयर किया है अरो कोट्स के आई स्कोर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये अरो कोट क्या है? ये वन ऑफ द थाउजेंड्स आईसी वर्ल्ड्स है कुइपर बेल्ट का आउटर जोन ऑफ सोलर सिस्टम, जो कि नेपच्यून के बियॉन्ड लाई करता है, वहाँ पर लोकेटेड है ऑफ कोर्स। ये फारदेस्ट ऑब्जेक्ट हैं स्पेस में जो कि ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोर करता है। 2014 में डिस्कवर किया गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। अब डबल लोब्ड ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्नोमैन को ये रिजेंबल करते हैं, और इसमें एंशंट गैशियस आइस जो है वो स्टोर्ड है विद इन इट। ठीक है। अब कुइपर बेल्ट क्या है? इसको हम एजवर्थ कुइपर बेल्ट भी कहते हैं। बेसिकली फ्लैट रिंग ऑफ स्मॉल आईसी बॉडीज़ हैं जो कि अभी भी सन के आसपास रिवॉल्व कर रही हैं बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट नेपच्यून। मिलियंस ऑफ ये आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स इनको हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट आकाश तीर। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने जो है वो प्रोजेक्ट आकाश तीर को के अंदर जो है वो कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम्स, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए जो है वो इंडक्ट किए हैं। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर एक कटिंग एज इनिशिएटिव है ऑटोमेट करने के लिए एयर डिफेंस कंट्रोल और उसके जितने भी रिपोर्टिंग प्रोसेसेस हों उन सबको डिजिटाइज किया जा रहा है। ठीक है। तो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस और कंट्रोल देगा हमारे फोर्स को ये, ताकि जो है फ्रेंडली एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके और हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को कंटेस्टेड एयर स्पेस में एंगेज किया जा सके। तो ये हमारे को इनेबल करेगा मॉनिटरिंग ऑफ लो लेवल एयर स्पेस और बैटल एरियाज ऑफ इंडियन आर्मी को ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स के द्वारा कंट्रोल करने में। इसको डेवलप किसने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। व्हीकल बेस्ड और मोबाइल दोनों ही ये सिस्टम्स हैं ये, और अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी और इंटीग्रेशन देगा। कोई भी हॉस्टाइल थ्रेट को स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करना, फ्रेंडली फायर को इंसिडेंट्स को मिनिमाइज़ करना। तो इसमें इसके लिए जो है रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है एक यूनिफाइड नेटवर्क में। ओवरऑल अगर हम देखें तो डिप्लॉयमेंट ऑफ आकाश तीर जो है वो सिग्निफिकेंट लीप दिखा रही है एयर डिफेंस ऑपरेशंस की हमारी कंट्री में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अग्निबाण सॉर्टेड। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड टाइम जो है वो अग्निबाण सॉर्टेड का मिशन जो है वो पोस्टपोन किया गया है। क्यों किया गया है पहले तो ये समझते हैं अग्निबाण है क्या। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल पावर्ड है अग्निकुल के पेटेंटेड एक अग्निलेट इंजन का। अब ये वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जिसको कि लॉन्च किया जाने वाला है इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड ALP-01 द्वारा। अब ये इंडिया का फर्स्ट एवर इक्विप्ड सेमी क्रायोजेनिक इंजन है अग्निलेट। रॉकेट इंजन जो है ये बर्न करेगा कैरोसिन को लिक्विड ऑक्सीजन में, और इसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकेगा रॉकेट से। 100 kg पेलोड ये अपने साथ लेके जा सकेगा 700 किलोमीटर तक की हाइट पर, और लो एंड हाई इंक्लिनेशन ऑर्बिट्स दोनों को एक्सेस कर सकेगा ये ऑफ कोर्स। फर्स्ट एवर इथरनेट बेस्ड एवियोनिक्स आर्किटेक्चर का इसमें यूज़ किया गया है। फुली इन हाउस डेवलप्ड ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर भी इसमें लगाया गया है इंडिया ने जो डेवलप किया है ऑफ कोर्स। अग्निकुल जो है एक लॉन्च पेडेस्टल नेम्ड धनुष जो है उसमें उसके लिए वो भी बिल्ड किया गया है। अब अगर हम देखें तो IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, चेन्नई बेस्ड।
पहली ऐसी कंपनी है जिसने इसरो के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इन स्पेस इनिशिएटिव नाम का, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो ऐसी कंट्री बनकर सामने आई है जिसमें कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स जो है वो फाइंड हुए हैं 2022 की टेस्टिंग फिगर्स के हिसाब से, एज़ पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या है? 1999 में इसको इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया गया था एक कोलैबोरेटिव वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के लिए, ताकि डोपिंग फ्री स्पोर्ट हो सके। और गवर्नेंस और इसकी जो फंडिंग है वो इक्वल पार्टनरशिप के थ्रू होती है स्पोर्ट्स मूवमेंट और गवर्नमेंट्स के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड। और एंटी डोपिंग रूल्स को और पॉलिसीज़ को बनाना अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स एंड कंट्रीज़, ये इसका प्राइमरी रोल है। साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, डेवलपमेंट करना, एंटी डोपिंग कैपेसिटीज़ की मॉनिटरिंग करना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड की, ये सब इसकी की एक्टिविटीज़ हैं। अब 1998 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया था कि एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डोपिंग होगी। उसके बाद लॉसेन डेक्लेरेशन हुई और 1999 में ये वाडा को बनाया गया। बेसिकली एक स्विस प्राइवेट लॉ नॉन प्रॉफिट और फाउंडेशन है ये, और इसकी सीट तो लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम जो है वो रिसेंटली एसएफसी मतलब स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ द्वारा लॉन्च की गई है। तो स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड जो है हमारी स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर कमांड है, और ये इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का ही एक पार्ट है और रिस्पॉन्सिबल है हमारे कमांड और कंट्रोल डिसीजंस का रिगार्डिंग इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहती है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देखने का कंट्री के टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल का। 2003 में इसको बनाया गया था। जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के ऑर्डर्स होते हैं उनको ऑपरेशनलाइज करने का काम करती है। न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करना, फाइनल टारगेट सिलेक्शन करना, सारी स्ट्रेटजिक फोर्सेस जो है जो कि कंटिजेंसी प्लान बनाती हैं न्यूक्लियर अटैक के टाइम पर, उनको फुलफ़िल करना, ठीक है। ये सब इसके टास्क हैं। और इसमें ऑफिसर्स जो हैं वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के ही होते हैं। तो काइंड ऑफ ये ट्राई सर्विस कमांड है ये, या हमारी थिएटर कमांड है एक, ठीक है। अब इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या है? ये वो अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल कमांड और कंट्रोल करने के लिए, और ऑपरेशनल डिसीजंस के ऊपर भी यही कंट्रोल करती है इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का। इसमें एक पॉलिटिकल काउंसिल होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, जो कि एक्चुअल में सोल अथॉरिटी है यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई है जिसको एनएसए जो है वो चेयर करते हैं। ये वो इनपुट्स देती है पॉलिटिकल काउंसिल को, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राखी गढ़ी। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी ने कुछ रिविजन्स किए हैं हिस्ट्री सिलेबस के क्लास 12 स्टूडेंट्स के, और उसमें बताया गया है कि हड़प्पन्स जो हैं वो राखी गढ़ी बेस्ड थे। तो राखी गढ़ी जो है वो एक आर्कोलॉजिकल साइट है हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, 27 किलोमीटर फ्रॉम घग्गर रिवर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट सिटीज़ है ये सब कॉन्टिनेंट के अर्लीस्ट ब्रॉन्ज एज की। वन ऑफ द 5 नोन बिगेस्ट टाउनशिप्स हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब अगर हम देखें तो इसकी एक्सप्लोरेशन में 7 आर्कोलॉजिकल माउंट्स पाए गए, यील्ड्स ऑफ एविडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन भी पाए गए, और ये जो मैच्योर हड़प्पन फेस को भी जो है रिप्रेजेंट करता है, जिसमें प्लान टाउनशिप्स और मड ब्रिक थे, सिरेमिक इंडस्ट्री थी रेडवेयर द्वारा रिप्रेजेंटेड, एनिमल सैक्रिफिशियल पिट्स पाए गए, सिलेंड्रिकल सील पाया गया, और एक्सकेवेशन से यहाँ पर एक्सटेंडेड बरियल्स भी देखे गए हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Green Credit Program. This topic is important for your environment section. So Ministry of Environment has recently issued the Green Credit Rules 2023, which will formally establish the Green Credit Program for India. So this Green Credit Program was launched by the Prime Minister on the sidelines of COP28, and it's an initiative within government's lifestyle for environment movement. So GCP introduces a markets-based approach to incentivize 8 identified environmental activities, and participants could earn incentives in the form of green credits.
by doing several of these 8 activities. So in the initial phase, the focus will be on just water management and afforestation, and subsequent phases will be covering up the other 6 activities like the sustainable agriculture, waste management, air pollution reduction, mangrove conservation and restoration, eco mark label development, and sustainable building and infrastructure. So what are these rules? So they were notified in 2023 October under Environment Protection Act, so as to put in place a mechanism to encourage voluntary environmental positive actions resulting in issuance of green credits. So in the initial phase, voluntary tree plantation is being envisaged on degraded land, wasteland or watershed areas. So who would be implementing this program? So or how it would be implemented? So approved entities can pay finance to afforestation projects in specific tracts of degraded forest and wasteland, but the actual for afforestation will only be done by the state forest departments. After you pay them, these state forest departments, and they will observe it 2 years after planting them. They will be evaluated by ICFRE, and each planted tree then would enable you to earn one green credit. These green credits can then be used by your companies to divert, for which you have diverted forest land for non-forest purposes, and raised thousands of trees. Okay, so as of now, 10 states have identified parcels of degraded forest land amounting to about 3853 hectares, and about 40% of these identified lands have been found only in Chhattisgarh and Madhya Pradesh. So we should know what is compensatory for afforestation. So basically, it is an obligation for any industry or institution which has diverted forest land for non-forest purposes. So they have to provide an equivalent amount of non-forest land to forest authorities and pay these forest authorities to afforest that land. The condition is that such land should be as close as possible to the forest tracts which have been raised, and if such land is unavailable, then twice the amount of degraded forest land must be made available for compensatory afforestation. Additionally, companies must also compensate for the value of the forest ecosystem called the net present value, which is lost due to the diversion of the forest land. So in several states, for example in Chhattisgarh and MP, we have seen challenges like large tracts have been historically diverted for mining, and getting a nearby non-forest land for compensatory afforestation is very challenging. So this would also occur with the this green credit program also, that money would flow or even the credits would flow, but the degraded forest land would not be, or non-forest land would not be available for compensatory afforestation. So this needs to be taken care of. So the next topic is new solar power rules to boost production. This topic is important for your economy section. To encourage the production of solar panels in India, Ministry of New and Renewable Energy has brought an executive order, so which requires manufacturers of solar modules to voluntarily submit to an inspection of their manufacturing facilities by a National Institute of Solar Energy. So once they get on the approved manufacturing facility list, or once they get certified, then they will become a legitimate manufacturer of solar panels and not a mere importer or assembler. This eligibility, or this certification, would make them eligible to compete for tenders which are issued by the government for its flagship solar energy programs like the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and PM Kusum Yojana. Okay, government has also a 24,000 crore scheme called the PLI scheme, under which incentives are given for to domestic manufacturers for manufacturing of solar panels and the components. So after certification, they would be able to get the benefits under the PLI scheme also. Why these voluntary rules are important? Because India's solar industry is heavily reliant on imports from China, and we want to restrict the same. Still, China controls about 80% of the global supply. Okay, and why is India reliant on imports? Because we have an ambitious plan of sourcing 500 gigawatts of electricity requirements from non-fossil fuel sources by 2030, which would mean that at least 280 gigawatt from solar power by that year would be required per year. Or per year 40 gigawatt of solar capacity has to be added until 2030.
but we have barely crossed 13 gigawatts per year, and government has claimed that COVID-19 has affected this trajectory. So nearly half of our solar modules are being imported from China, and we are still far away from achieving a comfortable degree of self-reliance. So 2023 and 24 was a fortunate year for us because China faced sanctions from both US and Europe, and because of certain human rights issues, and we got the benefit of it. And India exported about $1 billion of solar modules in 6 months of 2023 and 2024. So the next topic is UN Human Rights Council. This topic is important for your international relations. So India has abstained on a resolution at the Human Rights Council which called on Israel for an immediate ceasefire in Gaza and called on states to implement an arms embargo. So United Nations Human Rights Council is an intergovernmental body within the UN system, and it is based in Geneva, and this council was created in 2006 by the UN General Assembly. So the High Commissioner for Human Rights is the principal human rights official of the UN, and this council meets 3 times a year. So this council is made up of 47 states who are responsible for the promotion and protection of all human rights across the globe. These 47 members are elected directly and individually by secret ballot, and these human rights council candidates are elected in such a way that they represent the geographical groups and even representation. So members of the council serve for a period of 3 years, and they are not eligible for re-election after 2 consecutive terms. So these officials or these UNHRC members monitor human rights situations worldwide. There is also universal periodic review under which each UN member state has to get reviewed by other member states. Then there are special procedures also under which the UNHRC conducts fact-finding missions, and they raise awareness, make recommendations to address human rights violations. So India has already, of course, voted in favor of 3 other resolutions which criticized Israel, but this time we did not vote or we abstained because uh, the this resolution failed to condemn Hamas, but it condemned Israel. India believes that both parties should be condemned and accountability must be fixed according to their actions. Okay. So the next topic is Changpa tribe. This topic is important for your social issues. So climate activist Sonam Wangchuk and Leh Apex Body has decided to call off the Pashmina Border March, which is aimed at highlighting the plight of the Changpa nomadic tribes. So Changpa tribes are semi-nomadic people. They are found mainly in Changtang Plateau of southeastern Ladakh. They share linguistic and cultural affinities with Tibetans. All Changpa families profess Tibetan Buddhism as their religion. They are high altitude pastoralists, raising mainly yaks and goats. So these Changpa live nomadic lives, and the Changpa who live nomadic lives are known as Falpa, and those who have settled now in fixed locations are called Fangpa. For many Changpas, rearing of animals and consuming and selling their produce are the only means of livelihood. They rear the highly pedigreed and prized Changra goats, which yield the rare Pashmina fiber, which is one of the finest fiber of all goat hair. In 1989, Changpa were granted the official status in India as a scheduled tribe. So the next topic is RBI Retail Direct Scheme. This topic is important for your economy section. RBI is planning to launch a mobile application aimed at facilitating seamless investment under the RBI Retail Direct Scheme. So RBI Retail Direct Scheme was introduced in November 2021, which gives access to individual investors to maintain gilt accounts with RBI and invest in government securities. So this scheme enables investors to buy securities in primary auctions as well as buy or sell securities through the NDS-OM platform. So this provides facilities to retail investors in government securities through an online portal, and retail investors can register themselves under the scheme if they have a rupee savings bank account maintained in India, they have PAN or any officially valid document for KYC purpose, valid email ID or registered mobile number. They can make payments using internet banking or UPI. No fees will be charged for facilities provided under the scheme.
So the next topic is arrow code. This topic is important for your science and tech section. So recently scientists have proposed a model to explain the arrow code's ice core. So arrow code is one of the thousands of icy worlds in the Kuiper belt or the outer zone of the solar system, which lies beyond Neptune. And in the language of Powhatan tribe, Arrokoth means sky. So it is the farthest object in space which has been explored by a human spacecraft. Actually, it was discovered in 2014 using the Hubble Space Telescope. So it's a double-lobed object and it resembles a snowman. And many believe that it may have ancient gaseous ice stored deep within it. So Kuiper belt, we all know that it is Edgeworth Kuiper belt, and it's a flat ring of icy bodies which revolve around the sun beyond the orbit of planet Neptune, and there are millions of these icy objects collectively referred to as Kuiper belt objects. So the next topic is Project Akash Tir. This topic is important for your security section. So Indian Army has initiated the induction of and control and reporting systems under the Project Akash Tir to bolster its air defense capabilities. So Project Akash Tir is a cutting edge initiative designed to automate air defense control and reporting processes by digitizing them. So it aims to deliver an unprecedented level of situational awareness and control of the for the force to ensure the safety of friendly aircraft and engage hostile aircraft in contested airspace. So it will enable monitoring of low level airspace over the battle areas of Indian Army and effectively control the ground based air defense weapon systems. So what is Akash Tir command and control system? It has been developed by Bharat Electronics Limited and it is designed to be vehicle based and mobile so as to maintain operational capabilities even in challenging communication environments. So by digitizing air defense control and reporting processes, we'll be seeing unprecedented levels of efficiency and integration so that Indian Army can respond swiftly to hostile threats while minimizing the risks of friendly fire incidents. So it will integrate radar and communication systems into a unified network, and it will be a significant leap forwards towards the development of automated air defense operations. So the next topic is Agni Ban sorted. This topic is important for your science and tech section. For the second time, the launch of Agnikul Agniban sorted has been postponed. So Agniban suborbital technological demonstrator is a single stage launch vehicle powered by Agnikul's patented Agnilet engine, which is the world's first single piece 3D printed semi cryogenic rocket engine. It will be launched from India's first private launch pad called ALP-01, which is located inside ISRO's Sriharikota spaceport. And Agniban sorted is India's first ever vehicle equipped with semi-cryogenic engine Agnilet, and this rocket engine will burn kerosene in liquid oxygen, and it can be directly used in the rocket. It can carry a 100 kg payload up to a height of 700 kilometers with a lift of mass of 14,000 kgs. So it can access both low and high inclination orbits, and it is completely mobile. So it will also have the first ever Ethernet based avionics architecture and fully in-house developed autopilot software from India. Agnikul has also built a launch pedestal named Dhanush, which will support rockets mobility across all its configurations. So Agnikul Cosmos is an IIT Madras incubated space startup based in Chennai. It is the first company in the country which has signed an agreement with ISRO under the In Space initiative. Okay. So the next topic is World Anti-Doping Agency. This topic is important for your uh, social issues and your international relations. So India has emerged as the country with the highest percentage of doping offenders according to 2022 testing figures released by WADA. So what is World Anti-Doping Agency or WADA? So it was established in 1999 as an international independent agency to lead a collaborative effort or collaborative movement for free sport worldwide. So its governance and funding are based on an equal partnership between sports movement and governments of the world. So the primary role is to develop, harmonize and coordinate anti-doping rules and policies across all sports and countries. And the key activities include scientific research, education, development of anti-doping capacities, and monitoring of world doping anti-doping code. So in the summer of 1998, International Olympic Committee met to convene a World Conference on Doping, and the Lausanne Declaration was
issued, which established WADA in 1999. So WADA has been established as per the Swiss private law, and it's a not-for-profit foundation. Its seat is in Lausanne, that is in Switzerland, and its headquarters is located in Montreal, that is in Canada. So the next topic is Strategic Forces Command. This topic is important for your security section. So new generation ballistic missile Agni Prime was successfully flight tested by the Strategic Forces Command along with DRDO recently. So Strategic Forces Command, it forms the part of India's Nuclear Command Authority, and it is responsible for the command and control decisions regarding India's nuclear weapons program. So SFC is responsible for management and administration of country's tactical and strategic nuclear weapons stockpile. It was created in 2003. So it has the responsibility to operationalize the orders of Nuclear Commands Authority. It also has the sole responsibility of initiating the process of delivering nuclear weapons and warheads after acquiring clear approval from the NCA. So the final target selection is also done by them. It also manages and administers all strategic forces by exercising complete command and control over nuclear assets and producing all contingency plans as needed to fulfill the required tasks. So it consists of officers and personnel of the Indian Army, Indian Air Force, and Indian Navy who are deputed from their respective services. So basically, it's a tri service command. Okay, it is one of the first theater commands in India. So, what is Nuclear Commands Authority? It is the authority responsible for command, control, and operational decisions regarding India's nuclear weapons program. It comprises of a political council and an executive council. The political council is chaired by the Prime Minister, which is the sole body that can authorize the use of nuclear weapons. And to assist the political council, there is executive council, which is chaired by the National Security Advisor, and it provides input for decision making for the NCA. So the next topic is Rakhi Gadi. This topic is important for your art and culture section. So NCERT has recently introduced certain revisions to the history syllabus of class 12 students, and it has highlighted that Hadappans were based out in Rakhi Gadi. So Rakhi Gadi is an archaeological site located in Hisar district of Haryana, just 27 kilometers from Ghaggar river. It is one of the oldest and largest cities of the subcontinent's earliest known Bronze Age, and it is one of the 5 known biggest townships of Harappan civilization on the Indian subcontinent. The other 4 are Harappa, Mohenjo-daro, Ganberiwala in Pakistan, and Dholavira in India. So the findings have shown that through exploration we have found clearly identified 7 archaeological mounds. Rakhi Gadi primarily yields evidence of occupation also during the early and mature Harappan periods. The archaeological excavations have also revealed the mature Harappan phase, represented by a planned township with mud bricks as well as burnt brick houses with a proper drainage system. The ceramic industry has also been represented by red ware, and animal sacrificial pits, cylindrical seal, all have been found here. Excavations have also yielded a few extended burials, which certainly belong to a very late stage, maybe by the medieval times. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.